So our today's class is going to be based on true, false, not given, because I've been having a lot of feedback from the students that they have a problem in true, false, not given. So I thought, why not I record my live session and put it on the YouTube channel so that everybody can watch it whenever they want to. In case there's an electric failure or there's a problem, we can easily bank on YouTube that it can keep on giving us a very good quality video. So let us start with the work now. True, false, not given, and इसके बाद हम करेंगे live speaking 1:1. जो 1:1 स्पीकिंग होगी वो यूट्यूब पे नहीं जाएगी. आई एम जस्ट गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सेशन और मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा. तो पहले शुरू करते हैं. अगर आपने वेबर्स कम्युनिटी फॉलो नहीं करी है तो इस कोड को स्कैन कर लीजिए. आप डायरेक्टली वेबर्स कम्युनिटी ज्वाइन कर लेंगे जहां पे लेटेस्ट चीजें आती रहती हैं कि कौन सी क्लास है, कौन सा वीडियो रिलीज हुआ है. इट्स अ वेरी यूजफुल ग्रुप, वेरी वेरी यूजफुल ग्रुप. मैं टिप्स पे जा रहा हूँ. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की स्ट्रैटेजी कैसे यूज करनी है हमने. सबसे पहली बात तो ये होती है दे आर ऑलवेज इन अ सीक्वेंस. दूसरा, ट्राई टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स. आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू दैट हाउ टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स. The third strategy is there will be at least one of each type. That means one true, one false, and one not given are going to be there. Suppose 5 क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं होगा कि इसमें से 3 ट्रू हो गए 2 फॉल्स हो गए. इट्स नेवर लाइक दैट. इट्स ऑलवेज एक ट्रू, एक फॉल्स, एक नॉट गिवन तो होंगे ही होंगे. ये 3 पक्का होंगे. जो बाकी 2 बचे हैं वो इन तीनों में से कुछ भी रिपीट हो सकते हैं. सो बेसिकली 1 1 1 तीनों आते हैं. ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, इसे याद रखना, काफी काम आएगा. डिस्ट्रैक्टर्स के लिए वॉच आउट करो. मैं कुछ आपको वर्ड्स दे रहा हूं. एवरी, फ्यू, ऑल, ऑलवेज, सम, ऑफन, मोस्ट, ओकेजनली. ये सिंगल वर्ड्स होते हैं. दे कैन चेंज द सेंस ऑफ द सेंटेंस एंटायरली. टोटली दे कैन चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ द होल थिंग. Our next is in true false not given, the meaning of a statement must be exact with the opinion. It should be exact match with the opinion. Only then the answer is true. Otherwise the answer is never true. Either it's false or it's not given. Now there are some other words also, which means possibly. For example, seem, claim, suggest, possibly, believe, probably. They can also alter the meaning of a statement. Totally, they can change the meaning of a statement. And whenever these words come, your first and foremost task should be to underline these words. कौन से words? एक words मैंने यहाँ लिख के दिए हैं. ये देखिए, ये words हैं जी आपके लिए. These are the words which are very very important. ये हैं सारे. और ये देखो, every, a few, always, some, often, most, occasionally, ये वर्ड्स हैं. और इसके अलावा मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड में ये वर्ड्स हैं. ये सारे के सारे वर्ड्स को ना आप याद करके रख लो. ये पक्का सेंस चेंज करके जाएंगे. seem, claim, suggest, possibly, believe, probably, they can alter the entire sentence. So now the view or opinion of the writer may not be immediately clear from the text. आपको इमीडिएटली क्लियर नहीं हो सकता. आपको ना देखना पड़ेगा वो कहता क्या है. मैं पता है क्या स्ट्रैटेजी हमेशा यूज करता हूं कि whenever you find a particular answer, उसका एक सेंटेंस ऊपर पढ़ लो, एक सेंटेंस नीचे पढ़ लो. They might change the sense there and your answer might go wrong. So it's a very important thing कि थोड़ा पढ़ो नीचे तक जाके देखो. अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली, समझ आ जाएगी आप. The statements will contain synonyms and paraphrasing, so we look out for these. Synonyms हैं, paraphrasing है, ये आनी है हमेशा. And today in the afternoon, we worked a lot on paraphrasing. I was teaching you how to write an essay, how to paraphrase the statement. It's a very simple technique. It works very well. Remember, एक not given आएगा ही आएगा. Okay? आएगा ही आएगा एक not given. तो ये मत करना कि not given नहीं मिल रहा तो मैं पढ़ी जाऊं आगे तक निकल जाऊं, पीछे वाले पीछे रह गए, फिर और मुसीबत पड़ जाती है. That's not a very good idea. आज हम करेंगे थैलेसीन के ऊपर. So what is thylacine? We'll see this, what exactly it is. अब true false not given करने से पहले, let me just have a small feedback from you all that what is the problem that you're facing in true false not given, and why are you facing that problem again and again? Because even today in the class, what happened? I taught true false not given yesterday. So a lot of people got many correct.
But again, a lot of people could not get through. They could not get through. So I want to know what went wrong in your thought process. Why is it always getting wrong? So just raise your hand so I can unmute you and you can explain it to me. What is the problem? Just raise your hand and let me know. Harmandeep Kaur. Harman, I would like to know your views about true, false, not given. Unmute yourself, please, and let me know what is the problem. Sir, I think it creates a lot of confusions while it's true or You get very false. confused. In which do you get confused? In false and not given, or you get confused everywhere? False and true. In false and I not always no true false. in true and I false. always Oh, yes. I always confuse. so you take a lot of time in solving them. Yes, but now whenever I don't have find that answer, I skip them because I think that I have to uh, consume my time So in you do other the so question you rather do the than that. guesswork. You do the guesswork, right? Yes. True. You do Yes. that. That doesn't Yes, work. at the last moment. That doesn't work. Okay, let me just explain you one more thing. Now, what happens here in the real examination? True false not given frequency is very high today, extremely high. The problem is that whenever true false not given is there, every passage will have it. And when every passage will have it, it will be like 5 questions in one, 5 in the other, 6, 7 in the other. So total 20 questions are going to be there of true false not given. And suppose you write true in every question, every answer you write true. So how many will be correct? Maximum 7 or 8 will be correct out of 20. Okay, so that is not going to give you a band score. Definitely the reading will go for a toss. So we have to learn the concept come what may, what is true, false, not given. You have to understand this. Don't worry, I'm just going to help you out in this. And in case you are unable to get it, again, we'll record one more video. Again, we'll have one more session of true, false, not given till you're not clear. Bhavdeep Singh, please unmute yourself and let us know what is your problem in true, false, not given. Bhavdeep, please unmute yourself. Okay, Simran Devgan, kindly unmute yourself and let me know what problems are you facing in true, false, not given. Yes, sir. Sir, I'm confused between the Sir, not given and the true. Sometimes most of time I've suffered from this thing that I just put the answer true, but that answer come at the end is not given. So I I get just it. confused between the not given and the true answer. You are confused between not given and true. Harman Yes, was sir. confused between true and false. Okay, fine. Don't worry. I'm getting this feedback so I can come to know what level to start at. Okay, thank you so much. So let us see one more person, Bhavdeep Singh. Yes, Bhavdeep Singh. sir, me also confused in false and not given. Okay, you are Sir, confused which with false and not given. All right. Okay. So what confusion do you get? sir, sometimes I reached sir, I reached the main point, but sometimes it's totally wrong. So every time you read the Sometimes sentence, not you given get a or different false. answer. Every time you read the sentence, you get a different answer. Yes. Yeah. Sometimes you feel it's true, Yes, sometimes sir. you feel it's false. That is typically there. That is very true. Okay. Let's talk to Lovely Kaur. Yes, Lovely Kaur, what is your viewpoint? Unmute yourself, Lovely, and let us know. Shivani Jagrat? Yeah. Yes, Lovely. Please speak up. Sir, actually, in true false, the problem which I am going through is it's sometimes those true false are too far from each other and in different passages, and some are too close to each other and in a single passage. I And totally agree with you. I agree sometimes I absolutely. feel like yes, and sometimes I feel like one sentence is saying the exact meaning, Right. but at another time I get it that the another sentence is getting me the same meaning. So I Exactly. get Exactly. confused there. So you get confused between two sentences. Which one is the correct thing? Great. Wonderful. Okay. Yeah, sir, exactly. So let's talk to the last person. That is Shivani Jagrat. Shivani, please unmute yourself and let me know what is your problem. हेलो सर, गुड इवनिंग Very good evening. सर। फॉल्स और नॉट गिवन में सर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। False and not given में confusion create हो जाती है आपको. यस सर। Okay. Don't worry, we'll try to figure it out यस सर। and we'll fix up the thing. Don't worry about it. ठीक है? Yes. तो काफी फीडबैक्स मेरे को मिल गई हैं.
तो देखते हैं, अब हम काम शुरू करते हैं अपना. So let me share the screen. Okay, so now, my article is about a thylacine. So if you look at this photograph of a thylacine, you can see that it's an animal, and it looks like a mixture of a dog, a tiger, right? It's got stripes. It looks like more like a stray dog of India with a mixture of cat, stray dog, tiger, a crossbreed kind of a thing. So this article is going to be about this particular animal. So now, अब मेरे को पता नहीं एनिमल क्या है, ये क्या नहीं है, बट मेरे को बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं that this animal is either extinct or this animal is a hybrid, a genetically modified form of an animal, because we don't know what is the answer. So what we need to do is we need to focus our mind on one thing, that this article is about animals, okay, thylacine in specific. So if I read the questions, I can come to know what are they talking about, right? And it's going to be in a sequence. So if I read the questions, I can come to know the entire article. What is the article about? So let me just go through it one by one. I'll take your help and we'll keep on going further. So let us see the thylacine. So these are my questions. So I'm going to ask you about 8 questions. 8 questions I'm going to ask you, okay? So let's do it one by one. So let's see here. Significant number of thylacines were killed by humans from 1830 onwards. Significant numbers का क्या मतलब हुआ? बहुत ज्यादा numbers thylacines के मारे गए थे 1830 से onwards. तो मुझे पहला क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ गई बात ये कि ये आर्टिकल जो है, ये थैलेसीन एक एनिमल है जो एक्सटिंक्ट हो गया है, ह्यूमंस ने उसे मार डाला है. 1830 का है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड तो होगा नहीं, लॉजिक ये कहता है, राइट? सो अब ये बात क्लियर हो गई कि एनिमल्स की किलिंग हो रही थी एंड ह्यूमंस ने एनिमल्स को मार डाला, सिग्निफिकेंट नंबर्स, और वो नंबर्स खत्म हो गए, और अब ये एनिमल या तो मर चुका है या ऑलमोस्ट मरने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Several thylacines were born in the zoos during the late 1800s. 1800s की ना खत्म होते होते तो कहता काफी ज्यादा थैलेसीन जू में बॉर्न हुए. जू का मतलब क्या होता है? कैप्टिविटी में बॉर्न हुए. जॉन गोल्ड्स प्रेडिक्शन अबाउट थैलेसीन सरप्राइज सम बायोलॉजिस्ट. जॉन गोल्ड की जो प्रेडिक्शन थी थैलेसीन के बारे में, कुछ बायोलॉजिस्ट वो सुन के हैरान हो गए. दे वर सरप्राइज्ड. In the early 1900s, many scientists became worried about the possible extinction of the thylacine. Okay जी, 1900 के स्टार्टिंग में बहुत साइंटिस्ट वरी हो गए कि थैलेसीन एक्सटिंक्ट होने वाला है. T.T. Flynn's proposal to rehome captive thylacines on an island proved to be impractical. T.T. Flynn का प्रपोजल जो था कि थैलेसीन्स जो हमने पकड़े हुए हैं उनको एक आइलैंड पे ले जाएं, वहां जाके उनकी ब्रीडिंग करें, वो बढ़ जाएंगे, बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा आइडिया निकला. There was still reasonable number of thylacines in existence when a piece of legislation protecting the species during the breeding seasons was passed. उनका ब्रीडिंग सीजन था. ब्रीडिंग सीजन का मतलब होता है जब बच्चे पैदा होते हैं उनके, तो उस समय एक लेजिस्लेशन आया कि इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए. जब वो लेजिस्लेशन पास हुआ तो काफी ज्यादा रीजनेबल नंबर ऑफ थैलेसीन्स एग्जिस्टेंस में थे, मतलब सब खत्म नहीं हुए थे तब. From 1930 to 1936, the only known living thylacines were all in captivity. कहता है 1930 से लेकर 1936 तक जितने भी थैलेसीन्स लिविंग थे, जिंदा थे, वो सारे कैप्टिविटी में थे, यानी कि जूज में थे. लास्ट क्वेश्चन कहता है attempts to find living thylacines are now rarely made. कहता है आजकल थैलेसीन्स का कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर रहा ढूंढने के लिए. बहुत कम चांस है कि थैलेसीन मिले, उसको ढूंढने के चांसेस ही बहुत कम है, बहुत कम ढूंढ रहे हैं उससे. ठीक है, तो ये तो आ गए मेरे क्वेश्चंस. तो अब इन क्वेश्चंस की आपको समझ तो आई गई होगी क्या है. अब मैंने इनको ढूंढना है एक एक करके. तो मैंने क्या करूंगा, आपको पूरा एरिया दिखा दूंगा जहां पे क्वेश्चन है, साइड पे क्वेश्चन होगा, आपने क्वेश्चन पढ़ना है, उस एरिया को पढ़ना है, और नीचे चैट बॉक्स में लिख देना है ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन. मैं आपके आंसर्स अनाउंस करता रहूंगा और हम एनालाइज करते रहेंगे क्यों ये ट्रू है, क्यों फॉल्स है, क्यों नॉट गिवन है. हम टोटल 8 क्वेश्चंस करेंगे. 8 क्वेश्चंस के बाद विल फिनिश ऑफ दिस सेशन. फिर आपकी स्कोर चेक करेंगे कितनी स्कोर आपकी आई है, राइट? सो वी कैन कम टू नो
क्या हमारा प्रोग्रेस हुआ कि नहीं प्रोग्रेस हुआ. Your minimum score that you should be getting out of 8 should be 4, 5, 6, 7 or 8. That means 4 or more than 4 you should be getting. If you get less than 4, you are in a trouble. You have to tell me. I will arrange another class for you. Till you do not clear the concept of true, false, not given, please do not appear in the paper. Do not appear in the paper. In my polishing classes in the morning, we did headings today. I was very satisfied by doing the headings today. कल मैं इसका रिजल्ट देखूंगा, क्या रिजल्ट आएगा. पॉलिशिंग क्लास के जो बच्चे उनकी इंप्रूवमेंट हुई हेडिंग्स में कि नहीं हुई. मैंने कल रात को हेडिंग्स करवाई थी, आज सुबह मैंने एडवांस्ड हेडिंग्स कराई क्लास के अंदर. बहुत फर्क नजर आया, बहुत ज्यादा फर्क नजर आया मेरे को. आज मैं फिगर आउट करूंगा कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में फर्क आते कल के नहीं आता, हेडिंग्स में फर्क आता है कि नहीं आता. सो वी कैन कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. ओके, एंड कल हमारा रीडिंग पे सेशन एक और होगा. आई एम गोइंग टू डू इन द क्लासेस, आई एम गोइंग टू डू मैचिंग इन्फॉर्मेशन, एंड रात को एक और सेशन में उठा लूंगा इन केस आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम इन द क्लास. आई विल पिक अप वन मोर सेशन इन द नाइट. ओके, so now let us go and find out the first question. Now this is the first question. I am switching off my camera and giving you 1 minute to find the answer. Once you find the answer, write in the chat box. Stop. So now I'm going to read out the answers, what you said, and then we'll see what is the answer. So I got Lovely Kaur says true, Simran Devgan true, Shweta says true, Gurvinder says false, Simran says true, Sameer says true, Naveen says yes or true, fine, Anmol says true, Shivani says true, Yuvraj says true, Mehak says false, iPhone says true. Okay, so let me see the answer now. And the answer is true. देखते हैं आंसर ट्रू क्यों है. अंडरस्टैंड कीजिए ट्रू क्यों है. पहले ना you have to understand what is written there. The dramatic decline of the Thylacine in Tasmania, which began in the 1830s and continued for a century. Decline मतलब numbers गिरी जा रहे हैं उनके, ठीक है, is generally attributed to, उसका cause बता रहा है. Cause क्या है? To the relentless efforts of sheep farmers and bounty hunters with shotguns. शॉटगन्स मतलब छोटी छोटी बंदूकें जो होती हैं उससे मारते थे उनको शॉटगन से. कहता है उन्होंने बहुत ज्यादा एनिमल्स किल किए. रिलेंटलेस एफर्ट्स, रिलेंटलेस मतलब बेशुमार, बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए शीप फार्मर्स ने और बाउंटी हंटर्स ने शॉटगन्स के साथ में. तो ये आंसर मेरा निकला यहां से ट्रू. ओके, अगर आप नीचे भी पढ़ें तब भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी. विद दिस डिटरमिन्ड कैंपेन अनडाउटेडली प्लेड अ लार्ज पार्ट. कहता है बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट इसने प्ले किया है. It is likely that various other factors also contributed to the decline of eventual extinction of the species. कहता है और भी factors हो सकते हैं. These include competition with the wild dogs introduced by European settlers, loss of habitats with the disappearance of prey species, and a distemper-like disease which may also have affected the thylacine. कहता है और भी factors हैं इसके अंदर, but सबसे major factor जो है वो है animals को kill किया गया relentlessly. बेशुमार एनिमल्स मारे गए. क्वेश्चन नंबर 2, 1 मिनट का टाइम दूंगा, आप इसे सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने से पहले मैं सबको सजेस्ट करता हूं, प्लीज कीप अ पेंसिल एंड पेपर विद यू एंड कीप ऑन राइटिंग डाउन द आंसर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 so you can come to know what is your exact score. Once you know your exact score, when the session ends, I will ask your score so we can come to know is the session effective or it's not effective.
Okay, otherwise we'll be wasting time on everything. So let's do the next question, and I'm going to give you 1 minute once again. Your time starts now. Time over. Stop. So let's see our answers. So मेरे पास आंसर निकल रहे हैं इसमें. Let's see. So many answers have come in. Lovely says false. Shweta says false. Shivani says false. Simran says not given. Pavan says false. iPhone says true. Anmol says false. Bhavdeep says false. Samir says true. Mac says false. Simran says not given. Dorothy says false. Yuvraj says not given. Naveen says false. All right, let us see the answer. अभी ना एक काम करते हैं, ये करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा और एक टिप देता हूं. सेवरल का मतलब है बहुत, मैनी. ठीक है, मैनी. थैलेसीन्स वर बॉर्न इन द जूज ड्यूरिंग द लेट 1800s. कहते हैं 1800 के एंड होने तक बहुत थैलेसीन्स जूज में बॉर्न हुए. अब मैं यहां देखता हूं यहां क्या लिखा है. ये कहता है only one successful attempt to breed the thylacine in captivity at Melbourne in 1899. कहता है सिर्फ एक. यहां क्या लिखा है? many. यहां क्या लिखा है? one. तो अगर मैं इसको क्वेश्चन बना लूं, were several thylacines born in the zoos during the late 1800s? मेरा आंसर आएगा no, only one was there. तो ये मेरा बन गया false. No, only one was there. मैनी थोड़ी थे, ओनली वन वॉज देयर. तो अब देखते हैं इसका आंसर है मेरा फॉल्स. ओके, तो अब जिन लोगों ने इसका आंसर ट्रू लिखा उनसे हम इंटरव्यू लेके देखते हैं क्या उनको प्रॉब्लम आई, उन्होंने क्यों ट्रू किया इसे. तो समीर ने इसे ट्रू किया है. समीर आप मुझे बताएं अनम्यूट करके कि आपको क्या प्रॉब्लम आई, आपने क्यों ट्रू लिखा. जी समीर अनम्यूट करके बताएं आपने क्यों ट्रू लिखा. Sir, actually, I was confused that whether it is a true or false. ओके समीर देखो, कभी भी कंफ्यूजन आ जाए ना आपको, तो क्या Yes, sir. करना चाहिए पता है, इसको ना क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. Several thylacines were born in the zoos during the late 1800s. Were several thylacines born in the zoos during the late 1800s? और फिर पढ़ो, नहीं आपको लिखाएगा नहीं एक ही पैदा हुआ. वहां लिखा है बहुत ज्यादा थे, यहां लिखा है एक है. तो आंसर मेरा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, आंसर मेरा फॉल्स हो गया. क्लियर हो गया जी आपको? Okay, sir. Yes, sir. ग्रेट, वंडरफुल. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. अब क्वेश्चन नंबर 3 मेरा ये पढ़ेंगे पहले. जॉन गोल्ड्स प्रिडिक्शन अबाउट थैलेसीन सरप्राइज्ड सम बायोलॉजिस्ट. अब सबसे पहले तो मैंने ढूंढना है जॉन गोल्ड है कहां पे, उसको ढूंढ के देखना है क्या बाकी बायोलॉजिस्ट सरप्राइज हुए कि नहीं हुए. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
स्टॉप। तो आंसर देखते हैं जी, आंसर क्या क्या निकले आपके। तो आंसर बहुत लोगों के सही हैं। सिमरन नॉट गिवन, शिवानी नॉट गिवन, अनमोल नॉट गिवन, नवीन यादव नॉट गिवन, गुरविंदर कौर नॉट गिवन, सिमरनदीप नॉट गिवन, श्वेता नॉट गिवन, लवली कौर नॉट गिवन, डॉरथी नॉट गिवन, महक नॉट गिवन, युवराज नॉट गिवन, पवनदीप not given, Reeth not given, Bhavdeep not given. Very nice. And my answer is also not given, so I will not discuss this. You are very clear with the concept of not given. देखो, कभी भी फंस जाओ तो क्या करना है, हमने इसे क्वेश्चन की फॉर्म बना देनी है। Did John Gould's prediction about the thylacine surprise some biologist? क्या उसकी प्रिडिक्शन ने कुछ बायोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया, सरप्राइज कर दिया? तो आंसर में पता नहीं चल रहा हमें। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन। 2 क्वेश्चंस आएंगे, आपको टाइम मैं दे रहा हूं खाली 1.5 मिनट का, क्योंकि छोटा सी जगह में ही आपने ढूंढने। 2 क्वेश्चंस के आंसर लिख के पैसेज में चैट बॉक्स में डालिए। 1.5 मिनट का टाइम है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, 1.5 minutes is over, and I've got a lot of answers. Very nice. False, not given, false, not given, false, not given, false, not given. कुछ का ट्रू भी आ रहा है। Okay. देखते हैं जी क्या है ये। पहला वाला कहता है, in the early 1900s, many scientists became worried about the possible extinction of the thylacine. क्या अर्ली 1900s में काफी साइंटिस्ट वरी थे about the possible extinction of thylacine? और यहां देखते हैं क्या लिखा है। However, there seems to have been little public pressure to preserve the thylacine. कहता है बहुत ही पब्लिक ने कम प्रेशर डाला कि थैलेसीन को प्रिजर्व करो, सारे कहते हैं मार दो इसको, खत्म कर दो। Nor was much concern expressed. कंसर्न ही नहीं था साइंटिस्ट को कोई भी at the decline of the species in the decades that followed. कहता है ना साइंटिस्ट को था ना पब्लिक को था। और यहां क्या लिखा है, साइंटिस्ट को कंसर्न था। तो मेरा आंसर क्या बन गया, फॉल्स। अब नेक्स्ट आ गया टीटी फ्लिन के बारे में बात। टीटी फ्लिन्स प्रपोजल टू रीहोम कैप्टिव थैलेसीन्स ऑन एन आइलैंड प्रूव टू बी इम्प्रैक्टिकल। कहता है क्या टीटी फ्लिन का प्रपोजल, कैप्टिव मतलब जो बंधवा थैलेसीन्स थे उनको एक आइलैंड पे डालने का प्रैक्टिकल निकला कि अनप्रैक्टिकल निकला? यहां लिखे अनप्रैक्टिकल निकला, इम्प्रैक्टिकल सी बात थी। और यहां इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल था कि नहीं था, कोई इसने बात यहां नहीं करी। तो मेरा आंसर निकलता है फॉल्स एंड नॉट गिवन। और आप लोगों को बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहे हैं आप, वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और ये काफी खतरनाक सा टॉपिक है, काफी मुश्किल सी वोकैबुलरी है इसके अंदर। तो आगे चलते हैं जी। इसके बाद हमारा 6 और 7 क्वेश्चन आ गए। फिर से मैं आपको 1.5 मिनट ही दूंगा, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा, बस एक बात बता रहा हूं आपको। जहां कहीं फंस जाओ, whenever you are caught in something and you feel I am changing my answers again and again. First I see it's not given, then I read it's yes, then I read it's no. You know, every time you feel there's a different answer. So what you should do, you should convert that statement into a question. Make it an interrogative form. Interrogative form. Okay, for example, Ram is going to the market. Is Ram going to the market? कुछ लिखा हुआ है, उसको इंटेरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अगर आपका आंसर निकलता है हाँ जी सच है तो ट्रू हो जाएगा, नहीं जी कुछ और है, फॉल्स हो गया। अगर पता नहीं चल रहा तो नॉट गिवन हो गया।
So my takeaway from this session would be, I heard a lot of people, they are confused between true and false, false and not given and true. So they are confused in all the combinations and permutations. Whenever you are confused, make it into interrogative form. So I'll give you 2 questions, 1.5 minutes. Figure it out, write your answers in the chat box. These are 2 questions now. Your time starts now. Stop. Let us see the answer now. A lot of people have written different answers. So let me speak out the answers. Not given both, true, true both, false, true, true, not given. I know these are a little difficult. So let me explain it to you. Don't worry, it's not that difficult. अब इसको ना पहले ध्यान से पढ़ते हैं because इसमें vocabulary काफी खतरनाक सी है. There were still reasonable number of thylacines in existence when a piece of legislation protecting the species during the breeding season was passed. कहता है कि काफी रीजनेबल नंबर्स, अच्छा नंबर्स थे थैलासीन्स के जब इन एग्जिस्टेंस में थे, जब एक लेजिस्लेशन पास हुआ. किस चीज का लेजिस्लेशन? उनको प्रोटेक्ट करने का, उनके ब्रीडिंग सीजन के अंदर जब पास हुआ, तो काफी ज्यादा नंबर्स में वो थे. अब पढ़ते हैं 1929 की बात. But it was not until 1929, with the species on the verge of extinction, कहता है बिल्कुल खत्म होने वाले थे, बिल्कुल ही मर चुके थे, खत्म होने वाले थे, that Tasmania's Animals and Bird Protection Board passed a motion protecting thylacines only for the month of December, which was thought to be the prime breeding season. कहता है वो खत्म होने वाले थे तब जाके पास हुए, और यहां लिखा है रीजनेबल नंबर्स थे, खत्म नहीं होने वाले थे, काफी बचे हुए थे. तो इसका आंसर यहां से देख के निकलता है. 7th का, from 1930 to 1936, the only known living thylacines were all in captivity. 1930 से लेकर 1936 तक जितने भी बचे हुए thylacines थे, सारे ही zoos के अंदर थे, सारे. The last known wild thylacine, उस साइड चले जाइए, जाके पढ़िए. The last known wild thylacine to be killed was shot by a farmer in the northeast of Tasmania in 1930. Leaving just captive specimens. कहता है 1930 में लास्ट वाला थैलासीन मारा गया, एक फार्मर ने उसे मार दिया, और क्या बचा? सिर्फ कैप्टिव स्पेसिमेंस बचे. कैप्टिव स्पेसिमेंस मतलब जो कैप्टिविटी में थे, वही बचे खाली. Official protection of the species by the Tasmanian government was introduced in July 1936. 59 days before the last known individual died in Hobart Zoo in 1936. कहता है 1936 में जो बचा हुआ था जू में, वो भी मर गया. From 1930 to 1936, the only known living thylacines were all in captivity. अब इसको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में बनाता हूं. Were the thylacines from 1930 to 1936 only in captivity? And my answer comes from here, जो मैंने आपको बताया है. And my answers are false and true.
false and true. And I hope this concept is very clear to you now. False कब लिखना है, true कब लिखना है. Last question, ध्यान से करना, बहुत ध्यान से. क्वेश्चन पढ़िए, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा इसमें. 1 मिनट दे रहा हूं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. हो गया जी, टाइम खत्म. अब अपने आंसर चेक करेंगे हम. Attempts to find living thylacines are now rarely made. कहता है आजकल, now, attempts, कोशिश, to find living thylacines are rarely made. क्या आजकल बहुत कम अटेम्प्ट्स हो रहे हैं थैलेसीन्स को ढूंढने के लिए जो जिंदा हैं? पैसेज में जाते हैं. There have been numerous expeditions and searches for the thylacines over the years, none of which has produced definitive evidence that thylacines still exist. The species was declared extinct by the Tasmanian government in 1986. क्या इसके बारे में समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? मेरा आंसर निकलता है नॉट गिवन. और अगर मैं लोगों के आंसर देखूं तो काफी लोगों ने नॉट गिवन लिखा है, कई लोगों ने ट्रू लिखा है. अब मैं टोटल करता हूं. अगर आपकी स्कोर 4, 5, 6, 7, 8 है तो ठीक है. अगर 0, 1, 2, 3 है तो गलत है. अपनी अपनी स्कोर कैलकुलेट कीजिए और मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए आपकी क्या स्कोर आई है. मैं बोलूंगा लाउडली आपकी स्कोर्स को. लवली कौर 6, श्वेता 7, सिमरन कौर 5, महक, अरे वाह 7, वेरी नाइस. रीत 5, आईफोन 5, पवनदीप 6, शिवानी 6, अनमोल 8, अरे वाह अनमोल कमाल कर दिया तूने तो, वेरी नाइस. और भी लिखें अपनी स्कोर्स, जिसकी इसकी स्कोर आई है लिखें अपनी स्कोर्स सो वी कैन जस्ट हैव एन आइडिया. तो अभी तक तो 4 से नीचे किसी की नहीं आई, 4 भी नहीं आई किसी की. ओ वंडरफुल, 5 ही शुरू हुआ है. वेरी नाइस, चलो थैंक गॉड. तो कल देखेंगे इसका नजारा क्या होता है. तो इसके साथ ही हमारा ये कार्यक्रम होता है समाप्त ऑफ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का. एंड आई होप दैट इट विल बी ऑफ वेरी बिग हेल्प टू यू. These classes in the night, I love them because there is no stress, there is very less of tension. And पता है सबसे अच्छी बात क्या होती है इसमें? Whenever you are sleeping, the concepts keep on, echoing in your mind. So they keep on going on in your mind throughout the night. And by the morning, it is fully formed and you know what exactly is going on. So we'll stop the recording here.